So we'll start, Prabhu. जी प्रभु। Just give me a second. যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো, কেমনে ধরিতাম রে। যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো, কেমনে ধরিতাম রে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা, জগতে জানতো কে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা, জগতে জানতো কে। যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো, কেমনে ধরিতাম রে। এমনে ধরিতাম রে। মাধু বৃন্দা বিপিন মাধুরী, প্রবেশ চাতুরিসা। মাধু বৃন্দা বিপিন মাধুরী, প্রবেশ চাতুরিসা। ব্রজয়তি ভাবে ভক্তি, শক্তি হইতো কাল। ব্রজয়তি ভাবে ভক্তি, শক্তি হইতো কাল। যদি গৌর হইতো তবে কি হইতো, কেমনে ধরিতাম রে। কেমনে ধরিতাম রে। গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণা, সরল করি আমার। গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণা, সরল করি আমার। এ ভাষঙ্গরে এমন না দেখিয়ে কে যান। এমন সাগরে এমন না দেখিয়ে কে যান। যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো, কেমনে ধরিতাম রে। কেমনে ধরিতাম রে। আমি গৌরাঙ্গা বলিয়া না জ্ঞান গলিয়া, কেমনে ধরিনু রে। গৌরাঙ্গা বলিয়া না জ্ঞান গলিয়া, কেমনে ধরিনু রে। বাঁশুর হিয়া পাষাণ দিয়া, কেমনে ঘরিয়াছে। বাঁশুর হিয়া পাষাণ দিয়া, কেমনে ঘরিয়াছে। যদি গৌর হইতো
তবে কি হইতো কেমনে ধরিতাম রে। রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানতো কে। যদি গৌণ হইতো তবে কি হইতো কেমনে ধরিতাম রে। কেমনে ধরিতাম রে। যদি গৌণ হইতো তবে কি হইতো কেমনে ধরিতাম রে। কেমনে ধরিতাম রে। Scroll down. If Lord Gaura had not appeared as the Yuga avatar in this age of Kali, then what would have become of us? How could we have tolerated living? Who in this universe would have ever learned about the topmost limits of the loving affairs that comprise the glory of Sri Radha? Who would have had the power to render ecstatic devotional service that follows in the footsteps of the damsels of Vraja? Indeed, the clever expertise of the Vraja Gopis is a prerequisite for entering the supremely sweet forest of Vrinda Devi. Oh, please sing again and again of the glorious qualities of Lord Gauranga. Just try to keep your heart simple. Not even one person within this ocean of nations has ever seen such a magnanimous personality as he. Even though I chant the holy name of Lord Gauranga, somehow I still have not melted in ecstasy. How then have I maintained the burden of this body? How has the Creator fashioned this body with a stone in place of Vasudev Ghosh's heart? Shriman Vasudev Ghosh ji ki jai. Gaur Bhakta Brinda ki jai. Gaur Purnima Mahamahotsav ki jai. हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी अभी 7 बजे तक का समय है, यदि आप कीर्तन कर सके तो। Okay. थैंक यू प्रभु। Vraj Gauram Gauram Lavo Gauram Vraj Gauram Gauram Lavo Gauram Jai Jana
Jai Janam Krishna Shrimate Bhakti Swami Nirvishesha Paschatya Keshata Jaya Shri Krishna Jai Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivashadi Gaura Bhaktavrind Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Nitai Govindanande Hari Hari Shri Gauranga Mahatma Shri Gaur Purnima Mahamahotsav Samaved Bhaktivinoda. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. So sweet melody. Thank you. Gauranga, 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 Gauranga. आज विक्रम संवत 2079 शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 7 मार्च मंगलवार का दिन, आज होलिका दहन भी है। और आज हमारे बीच व्रज कृष्ण प्रभु हैं, जो आज हम लोगों को श्रीमद् भागवतम से जो अध्याय चल रहा है वेदों की स्तुति, उस पर प्रवचन करेंगे। व्रज कृष्ण प्रभु डिसाइपल हैं, शिष्य हैं परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज के, और इन्होंने इस्कॉन सन 1997 में ज्वाइन किया था, कृष्ण भावनामृत संघ, और प्रभु जी की दीक्षा सन 2001 में हुई थी।
प्रभु जी ने केप टाउन विश्वविद्यालय में शास्त्रीय संगीत का अध्ययन किया और विश्वविद्यालयों में कई कृष्ण भक्ति कार्यक्रम शुरू करने में प्रभु जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे हजारों छात्र जो हैं लाभान्वित हुए। प्रभु जो हैं मंदिर कमांडर और मंदिर अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है प्रभु ने। सन 2007 में प्रभु जी ने केप टाउन में गरीब समुदायों के लिए जीवन के लिए भोजन, जो हमारा फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम है इस्कॉन का, इस कार्यक्रम को उन्होंने तैयार किया और वो बहुत बखूबी चल रहा है। प्रभु जी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के वितरण में अग्रणी हैं। सन 2014 में प्रभु जी ने गौरांग योग संस्थान स्थापित किया और सन 2017 में प्रभु ने एक भवन खरीदा जो जिसमें कृष्ण भावनामृत को देने का उद्देश्य से दूसरों को एकत्रित करने का प्रभु का वो है। और प्रभु अपने सुरीले कीर्तन, अपने मधुर कीर्तन के लिए जाने जाते हैं। प्रभु ने 3 संगीत एल्बम जारी किए हैं और कृष्ण भावनापूर्ण सिम्फनी समस्वर का संगीत भी लिख रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और बुल्गारिया में प्रभु ने 17 रथ यात्रा उत्सवों का आयोजन किया है प्रभु ने। और प्रभु जो बीबीटी की पुस्तक में जो ट्रांसलेशन सेवा है लोकल लैंग्वेज में, हिंदी स्थानीय भाषाओं में, प्रभु ने उसमें अपना अनुवाद का योगदान भी दिया है। तो हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु को आमंत्रित करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ब्रज कृष्ण प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु is there? Yes, Prabhu. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Humble obeisances to your lotus feet. Jai Welcome. Dandavat Pranam to all of you. I have a problem. It says that my camera is being used by other apps. Close the other apps and try again. So Okay. I tried a few times to switch it on, and I have the audio going, but I don't know why the video is not allowing me. It gives again and again, your camera is being used by other apps. My computer was just for repairs, and I don't know if I had no problem like that before. Really don't know what to say. No problem, Prabhu. We can carry on. We just talk, yeah, okay. This is a Shravan. Yeah, it's more important. Okay, yes, okay. Okay, so we continue then. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we're reading from Srimad Bhagavatam, 10th canto, 87th chapter, text 36. I'm just trying to get the verse in English. If someone wants to chant the Sanskrit, that will be fine. Yes, प्रभु. तो आज प्रभु का थोड़ा लैपटॉप में थोड़ा इशू है, तो प्रभु का वीडियो जो है ऑन नहीं है, तो प्रभु को हम श्रवण करेंगे। तो
आज श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय के 36 नंबर श्लोक का हम पठन कर रहे हैं। और श्लोक इस तरह से है, सता इदम उत्थितम सदिति चेन्नम तर्क हतम व्यभिचरति क्वाचा मृषा न तथो भययुक् व्यवहृते विकल्प इसितोन्ध परंपराया भ्रमयति भारती ता उरु वृत्तिभिर उक्त जदान। शब्दार्थ इस तरह से है। प्रभु, कैन आई रीड द ट्रांसलेशन एंड द purport? Yeah, just 1 second. I will just get it from the internet, from the. Okay, so I'll read it, the Sanskrit, and then we carry on. Sata idam utahitam satiti chennanutarakahatam vyabhicharati kvacha mrishana tato bhayayuk vyavahartaye vikalpa ishiton da paramparaya brahmayati bharatita uru vrittibhir ukta jadan. Now you can read, Prabhu, the translation. तो इस श्लोक का शब्दार्थ, सतः स्थाई से, इदम इस ब्रह्मांड, उत्थितम निकले हुए, सत स्थाई, इति इस प्रकार, चेत यदि कोई प्रस्ताव करे, ननु निश्चय ही, तर्क तार्किक विरोध से, हतम निषिद्ध, व्यभिचारिति सामान्य नहीं रहता, क्वचा कुछ बातों में, क्वचा अन्य बातों में, मृषा भ्रम न नहीं, तथा उस तरह, उभय दोनों माने सत्य तथा भ्रम, युक संयोग, व्यवहृते हितये सामान्य मामलों में, विकल्प काल्पनिक स्थिति, इशितः वांछितः अंध अंधे व्यक्तियों की, परंपरा से, भ्रयति मोहित करती है, भारती ज्ञान के शब्द, ते तुम्हारे, उरु अनेक, वृत्त भी अपने पेशों से, उक्त कहे गए, जड़ान जड़। इसका अनुवाद इस तरह से है, यह प्रतिपादित किया जाता है कि यह जगत स्थायी रूप से सत्य है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्थायी सत्य से हुई है, किंतु इसका तार्किक खंडन हो सकता है। निसंदेह कभी कभी कार्य कारण का ऊपरी अभेद सत्य नहीं सिद्ध हो पाता, और कभी तो सत्य वस्तु का फल भ्रामक होता है। यही नहीं, यह जगत स्थायी रूप से सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल परम सत्य के ही स्वभावों में भाग नहीं लेता, अपितु उस सत्य को छिपाने वाले भ्रम में भी लेता है। वस्तुतः इस दृश्य जगत के दृश्य रूप उन अज्ञानी पुरुषों की परंपरा द्वारा अपनाई गई काल्पनिक व्यवस्था है, जो अपने भौतिक मामलों को सुगम बनाना चाहते थे। आपके वेदों के बुद्धिमतापूर्ण शब्द अपने विविध अर्थों तथा अंतर्हित व्यवहारों से उन सारे पुरुषों को मोहित कर लेते हैं, जिनके मन यज्ञों के मंत्रोच्चारों को सुनते सुनते जड़ हो गए हैं। Prabhu, I should read the purport also. Purport is very long, Prabhu. Purport probably will take half of the talk, so thank you. I can take it step by step. With your permission, I will do the Hindi translation. Thank you. Yeah, sure. I just don't understand why this is like that. I can. Okay, anyways, I mean, it would have been nice for the devotees to see me, but what to do? Okay, we'll just take it as it is. So I'm going to read the English and then elaborate on the verse. So the translation is the following in English.
it may be proposed that this world is permanently real because it is generated from the permanent reality. But such an argument is subject to logical refutation. You can translate this, Prabhu, again. It's तो प्रभु yes. इसका जो है इस श्लोक पे जो तात्पर्य है उसको विस्तार से समझाएंगे हमको। और इस श्लोक में जो पहला वाक्य आया है कि ये जो जगत है सत्य है किंतु नश्वर है, तो इस पे प्रभु आगे बताएंगे। So this is very interesting because it says that actually the context of this verse is that once upon a time Narada Muni, he asked Narayana Rishi about how come the Vedas that are describing the material world can actually have any information about Brahman or about the spiritual world. तो ये बहुत दिलचस्प प्रसंग है क्योंकि यहाँ पर नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा कि ये जो वेद हैं, ये जो भौतिक जगत के वेद हैं, ये आध्यात्मिक स्थिति को कैसे बता सकते हैं। नर नारायण ऋषि से पूछा था। So this same question was asked by Parikshit Maharaj to Shukadev Goswami. ये प्रश्न समान प्रश्न जो है परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से भी पूछा था। And so when Narada Muni inquired from Narayana Rishi, तो नारद मुनि ने जब नर नारायण जी से पूछा, yeah, he got one story from him about the sages of Janaloka. They were discussing the same subject. How come the Vedas that describe the material world can know about Brahman? तो ये जो कथा उन्होंने नारद जी ने जब नर नारायण ऋषि से ये पूछा था, तो उन्होंने एक कहानी के द्वारा उनको समझाया कि एक बार जनलोक के जो ऋषि हैं वो इसी तरह का प्रश्न उन्होंने पूछा था कि जो वेदों में ये जो भौतिक जगह का वर्णन है उससे हम आध्यात्मिक जगत को कैसे समझ सकते हैं। Yeah. So then from this discussion, it was revealed from this discussion that can you hear me? Yes, bro. Yes, please. Yes. From this discussion was revealed that one of the Kumaras, Sananda Kumara, as far as I remember, he was interviewed by the sages and he told them the story how the Vedas appeared once. They were from the breathing of the Lord. And they practically began to recite prayers which gave information about Brahman. तो ये जो चर्चा हुई थी जिसमें ऋषियों ने पूछा था, प्रभु बता रहे हैं कि सनंद कुमारों से ये पूछा था, तो उसमें इस बात की चर्चा हुई थी और उन्होंने बताया था कि उस साक्षात्कार जो हुआ था कि भगवान के जो स्नान करने से के बाद ये वेद जो हैं ये आए थे। So in this way this chapter appears now in the Srimad Bhagavatam. तो इस तरह से ये जो अध्याय है ये श्रीमद् भागवतम में आया है। I think the camera is working now. Can you see it or? Yes, Prabhu, we can see you. Okay, so I tried. But you are speaking on another connection. Yeah, I tried on Google. Okay. It's okay. Just let me stop the other one. Let's see now. Yes, bro, please. Thank you. Is it one only? What we are seeing is what we are listening, so it's okay. Yes. Yeah, there is no repetition. No.
Hmm. Can you hear me? Yeah, but the video has switched off. Yeah, because they were going simultaneously and in Google, and anyways, it's okay. I'm going to carry on like that because it's a big complication. I guess there is a problem with this computer. So, anyways, we continue with the purport or with the verse actually. So the first sentence of this verse, it states that um, someone may say that this world is permanently real because it is generated by the absolute truth. So what they are posing the question, if the world is generated by God or the absolute truth, shouldn't be also real and permanent. तो So ये जो श्लोक का जो अनुवाद है, इसमें पहला वाक्य है वो ये बताता है कि ये विश्व है, जो जगत है, वो स्थायी रूप से वास्तविक है क्योंकि ये परम सत्य से आया है। तो इसको हम स्थायी भी मान सकते हैं और सत्य भी मान सकते हैं क्योंकि ये भगवान से ही निकला है। So this is actually a question that all the time has been conversed in the spiritual communities तो ये about the nature of this world. Yeah. ये जो विश्व जगत का जो जो स्वरूप है, इसके ऊपर चर्चा हमेशा से होती आई है, खासकर आध्यात्मिक चर्चाओं में। And we continue further. It says sometimes the verse, sometimes indeed the apparent non-difference of a cause and its effect fails to prove true. And at other times the product of something real is illusory. So this is a very difficult to comprehend without thinking deeply about it. तो इसमें आगे कहा गया है कि निस्संदेह कभी-कभी कार्य कारण का ऊपरी अभेद सत्य नहीं सिद्ध हो पाता और कभी तो सत्य वस्तु का फल भ्रामक होता है। तो ये बहुत ही मुश्किल वो है, चर्चा है और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। But it's also very simple if you think about it. और ये बहुत सरल भी है अगर इसको हम सोचें तो। For example, the sun is the cause of the sun rays, and they're basically non-different. इसको समझना भी बहुत सरल है, जैसे कि सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य ही सूर्य किरणों का कारण है। But then we have the for example, the body and the shadow. The shadow emanates from the body, but the shadow is illusory. It doesn't have the same substance as the body. तो इसका दूसरा उदाहरण प्रभु ने बताया कि शरीर और शरीर की जो छाया होती है, उससे भी हम समझ सकते हैं कि छाया जो है वो मोह का कारण है, वो स्थायी नहीं है, लेकिन जो शरीर है वो स्थायी है। Okay, so does it make sense to all of you? तो आप सबको ये समझ में आया होगा। How, again, I'm summarizing, how the cause and the effect may be the same. In a sense, the sun and the sunshine, they have the same qualities, but the cause and the effect may be different in the case of the body and the shadow. तो आपको ये समझ में आया होगा, इसका सारांश ये है कि जो कारण है और उसका प्रभाव है वो एक ही है, और गुण जो है वो उससे हम समझ सकते हैं कि जैसे शरीर और शरीर की छाया, तो इस उदाहरण से भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। And so the question of the
the sages is whether this material world actually is of the same substance as God. तो साधुओं का ये प्रश्न था कि ये जो जो भौतिक जगत है वो पदार्थ स्वरूप जो है वो भगवान के ही तुल्य है। And Hare Krishna, can you see me? I'm trying again to actually. Okay, so I'll switch off the other one. You are muted, Prabhu. Can you unmute yourself? No, we cannot hear. Okay, so It's okay. you cannot hear me? Yes, Prabhu. Yeah, you can hear me now. All right, so there is so much confusion in this world whether God is personal or impersonal. So this was discussed by the Vedas, actually, the personified Vedas, that they, in their prayers, they explaining actually the both aspects of God, the personal aspect and the impersonal. तो यहाँ पर ये जो संसार में जो ये जो बहुत उलझन है लोगों के अंदर कि भगवान व्यक्तिगत है या निराकार, इस पे इस बात की चर्चा की गई है वेदों के द्वारा। So they try to understand whether this world is real permanently also, or it is temporary. तो ये इस बात पे भी चर्चा हो रही है कि ये जो संसार है वो स्थायी रूप से वास्तविक है या अस्थायी है। Why this is so important? Because they want to understand whether everything that emanates from God is also spiritual and permanent. तो ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि भगवान से जो भी चीज जनित है वो आध्यात्मिक भी है और स्थायी भी है। And of course, God's energy is eternal. However, his energy, especially the material energy, undergoes different transformations. तो ये बात को तो हमको समझ लेना चाहिए कि जो भगवान की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है वो शाश्वत है, लेकिन जो ये भौतिक जगत है जो भगवान से उत्पन्न होता है उसमें परिवर्तन, उनकी शक्ति का परिवर्तन है ये। So in the purport, it's explained how the Upanishads teach that this world is real but temporary. तो इस बात का उल्लेख हुआ है कि ये जो जगत है वो सही में वास्तविक है लेकिन अस्थायी है। So the impersonalists, they say Brahma Satya Jagan Mitya, and which means that the only truth is Brahman and this material world is false. तो जो निर्विशेषवादी हैं वो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जिसका मतलब है जो ब्रह्मन है वो सत्य है और जो जगत है वो नहीं है, वो अस्थाई है। But we see from the mantras in the Upanishads that this is not so, that this world is also real, it is just temporary. लेकिन हम उपनिषदों से इस बात को जान सकते हैं कि ये जो जगत है वो सच में असली है और लेकिन अस्थाई है। So, and then the spiritual reality is blissful and this material reality is full of suffering. और जो आध्यात्मिक वास्तविकता है वो बहुत आनंद देने वाली है और जो ये भौतिक जगत है इसमें बहुत सारी परेशानियां हैं। So there is this continuous
debate between personalists and impersonalists about the truth and reality of existence. तो ये निरंतर बहस चला करती है निराकारवादियों में और भगवान के भक्तों में कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता ये सच्चाई क्या है, कि ये जगत मिथ्या है कि ये जगत सत्य है। So we all agree, the impersonalists and the personalists agree that this world emanates from God. तो इस बात का तो चाहे वो निराकारवादी हो चाहे भक्त हो, इस बात से तो सहमत होंगे कि ये जो जगत है वो भगवान से ही उत्पन्न होता है। So the only difference in the perception of reality is that they think this world is actually non-factual or illusory, completely illusory. तो यहाँ पर निराकारवादी और व्यक्तिवादियों में एक जो ये धारणाएं है उसमें अंतर यही है कि ये जो जगत है वो गैर तथ्यात्मक है। But the Vaishnavas, they say that this world is real but temporary. This is very important. लेकिन जो वैष्णव हैं वो हमेशा ये इस बात को समझते हैं और कहते भी हैं कि ये जो जगत है वो वास्तविक है लेकिन अस्थायी है। So that's why the devotees, they do not reject a social structure, family. They do not reject. तो जो भक्त हैं वो सामाजिक जो ये स्ट्रक्चर है, संरचना है, उसको अस्वीकार नहीं करते। They do not reject, like for example, material items, like anything that can be used in the service of God is not rejected by Vaishnavas. Well, the Brahmavadis, they can actually proclaim the world as false and they can reject everything. तो जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, वो इस बात को बिल्कुल अस्वीकार करते हैं कि जो भौतिक वस्तुएं हैं ये असत्य हैं, इनका उपयोग हम भगवान की सेवा में कर सकते हैं, और जबकि ब्रह्मवादी जो हैं उस चीज को असत्य मानते हैं। So that's why Brahmavadis, they can go to extreme austerities and standing on one leg and tying your arm to the tree and standing like this for years. तो इस तरह जो निराकारवादी हैं, ब्रह्मवादी हैं, वो बहुत अत्यधिक तपस्या करते हैं, जैसे एक पैर पे वो खड़े रहते हैं काफी सालों तक, या अपनी बाहों को पेड़ से बांध कर उसको बहुत सालों तक वैसे ही रखते हैं। They are trying to reject this world as illusory. तो वो इस बात को अस्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो जगत है वो भ्रम है। And the devotees, they accept the world and they just try to dedicate their activities in the service of Krishna. तो जो भक्त हैं वो जो ये जगत है इसको स्वीकार करते हैं और अपने जितने भी उनके कार्यकलाप हैं वो भगवान को समर्पित करते हैं। And in that way they are transcending this material world. और इस तरह से जो भक्त हैं वो इस भौतिक जगत को ट्रांसेंड करते हैं, पार करते हैं। They don't have to perform severe austerities to transcend the world. इस जो भव सागर है इससे पार करने के लिए जो भक्त हैं वो बहुत तपस्या नहीं करते। So the devotees' tapasya is to chant the holy name. जो भक्तों की तपस्या है वो हरिनाम का गान है, कीर्तन है। Especially in this age, is chanting of the holy name. ये जो युग है इसमें जो भगवान का नाम का उच्चारण है, भगवान के नाम का संकीर्तन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
And in this way, the devotees are connecting with Krishna and they are seeing everything in a proper perspective. और इस तरह से जो भक्त हैं वो हमेशा भगवान को और भगवान का जो स्वरूप है उसको उनका दृष्टिकोण जो है वो समृद्ध होता है। So the word sannyas actually means, in English translation, someone who puts things into their proper place. तो सन्यास का जो अंग्रेजी शब्द है उसका मतलब है कि किसी चीज को उसके उपयुक्त स्थान पर रखना, उचित स्थान पर And रखना। this, yeah, and this means that one who is accepting sannyas, he no longer enjoys independently from God. और इसका मतलब है जिसने सन्यास ले लिया है वो भगवान से अलग होकर किसी चीज का आनंद नहीं लेता। In the material world, people are enjoying themselves without God. They are performing karma, karmic activities. और इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि जो भौतिकवादी हैं वो समग्र दुनिया में जो रहकर उसका आनंद लेते हैं लेकिन भगवान से अलग रह के। But when one takes sannyas, when one becomes a devotee, he actually takes sannyas in one sense. तो जो भक्त है एक तरह से उन्होंने सन्यास ही लिया होता है एक तरह से, Because the devotees put everything in its proper perspective. क्योंकि जो भक्त हैं वो जो चीजों को अपने जो उसका उचित स्थान है, दृष्टिकोण है उनका वो समृद्ध होता है। And what is the proper perspective? Engage everything in the service of the owner. और ये जो दृष्टिकोण है, जो समृद्ध दृष्टिकोण है वो क्या है कि हम जितनी भी चीजें हैं वो भगवान की सेवा में संलग्न करें। So this is natural and it's easy compared to the path given by the impersonalists, the path of austerities. तो ये जो विधि है वो बहुत प्राकृतिक है और आसान है, और जो निराकारवादी जिस पथ पे चलते हैं वो बिल्कुल अलग, उससे बिल्कुल अलग है। If we could attain perfection through austerities, if that was the way to attain perfection through austerities, how many people could do austerities out of 8 billion people? How many people could afford the time and the energy and even have the desire to perform austerities in our modern society? अगर भगवान को प्राप्त करने की ये विधि सही होती कि तपस्या एक विधि है, तो उसकी पूर्णता, उस तपस्या की पूर्णता को कितने लोग कर पाएंगे? क्योंकि इस पृथ्वी पे 8 बिलियन 800 करोड़ लोग हैं, तो इतने लोगों को ये तपस्या करना मुश्किल ही पड़ेगा। Very few people can do actually tapasya. बहुत कम ही लोग इस तपस्या को कर सकते हैं। But chanting the holy name, Prabhupada said, even a child can do. तो प्रभुपाद कहते हैं कि पवित्र नाम का जप तो एक बच्चा भी कर सकता है। So that's why the bhakti process is the easiest process, the most accessible to the masses. So it's the most merciful process. तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो प्रक्रिया है भगवान के नाम को का जप करने की, ये सबसे आसान है और सबके लिए ये सब तक पहुंच भी सकती है, सारे जितने मनुष्य हैं। So Krishna comes in the form of his holy name to associate with the fallen souls and give them opportunity to perfect themselves. तो भगवान जो हैं वो अपने पवित्र नाम के रूप में आते हैं और हम मनुष्यों पे कृपा करते हैं। And by doing so, by chanting the holy name, they actually associate with him, the souls associate with God and get purified. और जो भक्त हैं जो भगवान का जप करते हैं, वो ऐसा करने से भगवान से ही उनका संबंध बन जाता है और उनमें उनकी वो पवित्र हो जाते हैं। And they become purified and detached from the material activities.
तो वो ना ना तो पवित्र तो होते ही होते हैं, लेकिन इस भौतिक जगत से भी उनकी आसक्ति खत्म हो जाती है। And what does it mean to be detached from material things? और ये जो भौतिक आसक्ति छोड़ना है, इसका मतलब क्या है? It means that we are no longer seeing ourselves separate from God. इसका मतलब ये है कि अब हम भगवान से अपने आप को अलग नहीं देखते। So this is called perfect monism. तो ये जो भगवान से अपने को अलग ना देखना, इसको कहते हैं कि पूर्ण अद्वैतवाद। Because we understand that we have no separate existence from God. क्योंकि हमको ये समझ में आता है कि हमारा जो है भगवान से अलग कोई स्वरूप नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। And it is perfect monism because we understand our oneness with God, but at the same time, we understand that that oneness is achieved through eternal loving service. तो ये जो अलग ना मानने का जो हमारी धारणा है, जिसको प्रभु जी ने बताया कि परफेक्ट उत्तम अद्वैतवाद, तो इससे हमको भगवान से एकता भी हासिल होती है, और ऐसा इसलिए होता है कि हम भगवान की भक्ति में सेवा कर रहे होते हैं। So it sounds contradictory that we are becoming, in one sense, one with God, and in another sense, we retain our identity. It looks contradictory. तो ये विरोधाभासी लगता है कि एक तरफ तो हम भगवान के साथ हैं और दूसरी तरफ भगवान से अलग भी हैं। तो ये बहुत असंगत लगता है हमको। So this is very important to understand how we are one with God and at the same time we maintain our individual identity. तो इस तरह से हमको ये समझना होगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरह से हम भगवान से अलग भी हैं, भगवान के जैसे ही हैं, और दूसरी तरफ भगवान से हम अलग, हमारी पहचान है। So the impersonalists, their objective is to merge in God and lose their identity. तो जो निर्विशेषवादी होते हैं, इनकी ये वो होता है, उनकी धारणा होती है कि हम भगवान में ही सम्मिलित हो जाएं, भगवान का ही रूप हो जाए, पालें। So they want to destroy their identity because they falsely believe that by destroying the separate identity, they are getting the full blessings of reality. तो ऐसा निराकारवादी मानते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी पहचान को नष्ट कर दिया, अपना जो उनकी पहचान है वो भगवान में समग्र होकर भगवान, उनकी पहचान नष्ट हो गई, तो इससे उनको लगता है कि उनको पूर्ण आशीर्वाद मिल गया। इस विचार से उनको लगता है कि पूर्ण आशीर्वाद मिल गया। So this is a very imperfect notion because first of all, if there is only Brahman without any variegatedness, if Brahman is just homogeneous oneness, if Brahman is homogeneous oneness, if Brahman falls into Maya, then the whole Brahman will fall into Maya, and there will be no other aspect of Brahman to be remaining. And then the question is where the avatar is coming from. If Brahman is fallen into Maya, let's say, then the question is, because Brahman is one and it fell into Maya, then where the avatars come from? तो ये जो धारणा है ये बहुत अपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मन में जो विविधता है, जो समरूप एकता है, अगर इसको हम माने कि ऐसा नहीं है, तो माया में अगर ब्रह्मन गिर जाए
तो भगवान के जितने अवतार आते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? So we can see that the impersonal philosophy is full of holes, full of mistakes. तो इस तरह से जो निराकारवादी जो हैं, इनकी जो जो फिलॉसफी है, जो उनकी धारणा है, दर्शन है उनका, ये इसमें बहुत असत्य है। At the same time, we see that in our modern day society, it's the most widely spread philosophy or teaching. लेकिन हम ये देखते हैं कि आधुनिक समाज में ये सबसे ज्यादा व्याप्त है, ये जो दर्शन है वो सबसे ज्यादा व्याप्त है। Practically on YouTube, you see all the different impersonalistic teachers. तो हम लोग देख सकते हैं आजकल के जो YouTube चैनल है या जितना भी सोशल मीडिया है कि वास्तव में ये जो निराकारवादी हैं उनके बहुत सारे शिक्षक इस तरह के उपदेश दे रहे हैं। Like Sadhguru or the Shri Ravi Shankar or Muji, etc. Like that. तो जिस तरह से सदगुरु हैं, श्री रविशंकर हैं और अन्य इसी दर्शन को का प्रचारण करते हैं। So they're the most outspoken out there, and people en masse are learning about impersonalism. But the Vaishnavas, we don't have that kind of presentation, unfortunately. तो ये जो निराकारवादी हैं, ये बहुत मुखर रूप से अपने दर्शन को प्रस्तुत करते हैं, लेकिन ये थोड़ा जो वैष्णव हैं, उनका जो प्रेजेंटेशन, उनकी जो प्रस्तुति है, वो उतनी दृढ़ नहीं है। So they are very, the impersonalists are very charismatic. They're very sweet-spoken and appear to be wise men that are guiding society, and people are actually taking that bait. तो ऐसा लगता है कि ये जो ऐसा दिखता है हमको कि ये जो निराकारवादी हैं वो बहुत करिश्माई लगते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत बुद्धिमान दिखते हैं और इस तरह से वो अपना प्रचार कर रहे हैं। For example, I heard one time, I could say by accident, Sadhguru was saying that the Indians invented the concept of the soul. इस तरह से मैंने एक बार दुर्घटनावश सदगुरु को सुना कि वो कह रहे थे कि भारतीयों ने जो है वो आत्मा का आविष्कार किया है। So, and so many people start to believe that there is no soul, that it's all matter. And it comes again to this conclusion that if Brahman is spiritual, then everything that emanates from him is also spiritual. And therefore, matter is spirit and spirit is matter, and there is no soul, and like that they're trying to propagate. तो इस तरह से ये विश्वास करना लेकिन बहुत अजीब सा है कि आत्मा नहीं है, सब कुछ भौतिक है और ये निष्कर्ष निकालना कि अगर ब्रह्मन आध्यात्मिक है तो सब कुछ आध्यात्मिक होगा, तो सब कुछ आध्यात्मिक होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो इस तरह की धारणाएं चल रही हैं समाज में। So we know Prabhupada explained in Life Comes from Life that yes, from one perspective there is everything is spirit. Krishna sees everything as spirit. But when someone is fallen into Maya, like we are in the material reality, into this real but temporary world, we have to differentiate between matter and spirit. तो इस बात को प्रभुपाद ने हम लोग को बखूबी सिखाया है, उसकी उन्होंने व्याख्या की है, खासकर ये जो उनकी पुस्तक है जीवन जीवन से आता है कि जो भौतिक वास्तविकता है उसमें अंतर भी है और हमारे और उसमें अंतर भी है और आध्यात्मिक और भौतिक जगत में जो अंतर है उसको प्रभुपाद ने हम लोग को समझाया है। For example, Chaitanya Mahaprabhu, when he was a small boy, Nimai, he was joking with Mother Sachi. And he was eating earth by pretending that all is one. And Mother Sachi chastised him. She was teaching him Vaishnavism.
तो इस तरह से जो चैतन्य महाप्रभु थे, जब वो छोटे लड़के थे तो एक बार वो माँ सची के सामने, अपनी माता के सामने मिट्टी खा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ तो एक है, तो मैं मिट्टी खा सकता हूँ। तो इस पे उनकी माँ ने उनको काफी डांटा था। So we know the story. He ate earth, and Mother Sachi explained to him that actually, yes, everything is made of the same substance, but still there is variety within that substance. And for us, it's good to eat sandesh, but not to eat earth. तो माता सची ने इस चीज की व्याख्या की कि हाँ ठीक है कि सभी एक ही पदार्थ है, लेकिन फिर भी विविधता है। जैसे आप संदेश और मिट्टी दोनों को समान नहीं मान सकते, दोनों में So in this विविधता way, है। the Vaishnavas are always making differentiation between matter and spirit. तो इस तरह से जो अंतर है भौतिक उसमें और आध्यात्मिक उसमें उसमें अंतर वो बताते रहते थे। So a few more things, and I'll take a question or comment. The impersonalists actually, for example, they try to appear very liberal to people. तो जो निराकारवादी हैं उसमें कुछ चीजें मैं इसमें और बताऊंगा कि वो दूसरों को बहुत उदार दिखते हैं। They say we worship everyone. We don't just focus on Krishna. We worship Durga, we worship Shiva, we worship Hanuman, Lakshmi. We worship everyone. We are not fanatics to focus only on Krishna. That's what they say. तो वो जो निराकारवादी कहते हैं कि हम सभी की पूजा करते हैं और हम बहुत उदार हैं, हम कोई कट्टरपंथी नहीं है। हम शिव की भी पूजा करते हैं, कृष्ण की भी पूजा करते हैं, लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं, सबकी पूजा करते हैं। So they don't differentiate. तो वो अंतर नहीं करते। It's the same principle as Chaitanya eating earth. ये वही दर्शन है ये वो कि जिसमें चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत है कि जिसमें चैतन्य महाप्रभु मिट्टी को खा रहे थे as a boy, as जब Nimai. जब वो निमाय छोटे बालक के रूप में थे। Yeah. So Vaishnavas, we actually differentiate that there are devatas and there is the Supreme Lord. तो जो वैष्णव हैं वो इस बात का अंतर करते हैं कि एक भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, और दूसरे देवता। And we don't disrespect the devatas, but we do not give them equal standing with the Lord. तो हम अवमानना नहीं करते देवताओं की, हम अवमानना नहीं करते, लेकिन उनको भगवान के बराबर भी नहीं मानते। In one sense, that why not equal standing? Because we know that their emanations or expansions of the Supreme Lord presenting a partial, they hold a partial power that is coming also from the Supreme Lord. तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि जो भगवान के विस्तार हैं, जो भगवान के और अवतार हैं, उनके अंदर आंशिक शक्ति है। भगवान के अंदर पूर्ण शक्ति है, लेकिन जो उनके अवतार हैं, एक्सपेंशन है, उनके अंदर आंशिक शक्ति है। So the full power actually is held by the Supreme Person, Swayam Bhagavan. तो जो भगवान की जो पूरी शक्ति है, जो ये पूरी शक्ति जो है, वो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में ही है, उन्हीं से आती है। They don't understand this. ये उस चीज को नहीं समझ सकते। Sometimes they would worship. They will say, "Why are you not worshiping Shiva? Why are you worshiping only Krishna?" They will say like that. कई बार ये बोलते हैं कि आप भगवान शिव की पूजा क्यों नहीं करते, सिर्फ भगवान कृष्ण की ही पूजा क्यों करते हैं। And we say to them, we respect Shiva and we worship him as a devotee of God. We are not worshiping him as the. तो हम उनको ये बोलेंगे कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है शिव जी, लेकिन हम उनका आदर करते हैं क्योंकि वो सबसे बड़े वैष्णव हैं। So they don't respect that. They say, no, this is not proper. He is equal to God.
तो इस बात को वो मानते नहीं और कहते हैं कि नहीं नहीं ये उचित नहीं है, वो भगवान के ही बराबर है। So we understand that uh, Shiva is an avatar of the Lord, an expansion of the Lord, and we respect that, but they don't see how we actually giving the proper respect to Lord Shiva by calling him Vaishnavanam Yatam Shambhu. तो इस बात को हम समझते हैं, जो वैष्णव हैं इस बात को समझते हैं कि शिव जी जो हैं वो भगवान के अवतार हैं, उनके विस्तार हैं, लेकिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं नहीं है। So they're very attached, for example, to Lord Shiva, and they're ready to fight that Lord Shiva should be accepted as God. तो इस बात से ये दे सकते हैं कि वो भगवान, ये जो धारणा है उनकी कि भगवान शिव ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उससे बड़ी वो आसक्त रहते हैं, और इसको बोलने के लिए, इसको साक्षात करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, लड़ भी सकते हैं। And then when you ask them, so what happens to Lord Shiva in terms of Brahman? If in Brahman there is no Lord Shiva, then that means Lord Shiva is Maya also, it's an illusion. तो जब हमसे कि पूछें तो ऐसे में क्या होता है जब भगवान शिव जो हैं वो ब्रह्मन अगर हैं, तो अगर ब्रह्मन नहीं है तो क्या सब माया है? So why are you so attached and why are you fighting so much to accept Shiva, which you think is Maya, because in Brahman there is no Shiva? Why are you so attached to the Shiva, which you think that ultimately he doesn't exist? तो हम इनसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप इतने इतने क्यों आसक्त हैं भगवान शिव से, कि अगर वो ब्रह्मन के का रूप है और ब्रह्मन अगर नहीं है तो भगवान तो फिर माया हो गए। We the Vaishnavas know that Lord Shiva exists here and he exists eternally also. जो हम वैष्णव हैं उनको उनको इस बात का पता बजने है वाले हैं, अभी बजे नहीं है 6 मिनट है। कि भगवान शिव जो हैं मौजूद हैं और भगवान शिव जो हैं भगवान के भक्त हैं। Yeah, so Lord Shiva exists eternally. And भगवान शिव जो हैं वो शाश्वत हैं we have an eternal relationship with him. और हमारा भगवान शिव से भी शाश्वत संबंध है। And this is the respect that should be given to Shiva as an eternal being who is an aspect of God, and not that Shiva is just an illusory manifestation that has no standing in Brahman. That's what they believe. तो इस बात को हम समझते हैं कि भगवान शिव जो हैं वो शाश्वत हैं और इसी के कारण से हम उनका सम्मान करते हैं, कोई वो भ्रामक नहीं है, और इसके कारण से उनको उनको हम आदर करते हैं। So we don't want to fight with them. हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। Yeah, we know that they cannot understand Vaishnavism. तो इस बात को हमको समझना चाहिए कि वो ये जो वैष्णव पद्धति है उसको वो समझ नहीं सकते हैं। So the Vedas themselves, they present both aspects, the impersonal and the personal, as valid kind of spiritual practices. तो वेदों में भी इस बात को कहा गया है कि और ये वैध है कि आध्यात्मिक आकारवादी और निराकारवादी दोनों जो पथ हैं वो ठीक हैं। And some people will be attracted to the impersonal, some people will be attracted to the personal aspect of God. तो कुछ लोग जो हैं वो भगवान के अव्यक्तिक और कुछ भगवान के व्यक्तिक रूप से जुड़ जाते हैं। So what I usually try, if I see an impersonalist, I try to talk to them to see whether they have some hope to understand the personal aspect, and if they don't, I just smile at them and wish them a happy day. तो मैं जब किसी मायावादी से मिलता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई उनके अंदर समझने की ये आशा है कि वो समझ सकते हैं भगवान का साकार रूप, तो मैं उनसे बात करता हूँ, अन्यथा मैं हंस के अलग हट जाता हूँ।
So we don't enter into fighting and debates with them because their perception of reality is very different from ours. क्योंकि इस तरह से हम उनसे कोई लड़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी जो अनुभूति है, उनका जो साक्षात्कार है, वो बिल्कुल अलग है. And if you examine their perspective, you'll see it's full of defects, it's full of faults. तो इस तरह से अगर आप सच में देखें, उसकी जांच करें कि जो उनकी जो धारणा है वो कैसी है, तो उसमें बहुत सारे असत्य हैं. So to be able to purify an impersonalist, first of all, we must be happy as Vaishnavas. सबसे पहले अगर ये धारणा को हमको शुद्ध करना है, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि हमको आनंदित रहना चाहिए, वैष्णवों को आनंदित रहना चाहिए. If you are not experiencing Anandam Buddhi Vardhanam and yourself, you will not be able to convince an impersonalist that your philosophy is valuable. तो अगर आप खुद इस बात का अनुभव नहीं करते, आनंद बुद्धि वर्धनम, आप आनंद का अनुभव नहीं करते, तो आप उनके सामने इस तथ्य को नहीं रख सकते और ना ही समझा सकते हैं. So I've understood that impersonalists, they don't hear what you say. They try to feel your energy, whether you're happy or disturbed or confused. They work on the emotion rather. तो इस तरह से जो ये मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, वो ये आप जब उनसे मिलते हैं तो स्पष्ट रूप से ये महसूस करने की कोशिश करते हैं कि आप आनंदित हैं कि नहीं. ये आपकी भावनाओं से ज्यादा प्रभावित होते हैं. The buddhi is not so active there. Intelligence is not so active. और जो उनकी जो बुद्धि है वो बहुत सक्रिय नहीं होती. And even if it's active, it's defective. तो जो सक्रिय होती हैं वो डिफेक्टिव है, उसमें कोई ना कोई त्रुटि है. The example is Sarvabhauma Bhattacharya Prakasananda Saraswati. तो उदाहरण के तौर पर सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती का जो लीला है उससे हम समझ सकते हैं. So this last thing, just in brief, these two. Mahaprabhu heard him for 7 days without saying anything. Sarvabhauma Bhattacharya. तो इसको हम संक्षेप में समझने की कोशिश करेंगे. सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने 7 दिन सुना. So just devotees should note that Mahaprabhu didn't get angry at the first minute when Sarvabhauma was talking nonsense. तो इस तरह से हम भक्तों को ये समझना चाहिए कि जब सार्वभौम भट्टाचार्य जो इस तरह की बकवास कर रहे थे, लेकिन भगवान गुस्सा नहीं हुए. He was tolerant and peaceful and waited until Sarvabhauma asked him, "My dear sir, what do you think?" Then Mahaprabhu spoke. तो इस तरह से जब सार्वभौम भट्टाचार्य बोल रहे थे तो महाप्रभु बहुत सहिष्णु थे, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने सुना. और जब अंत में जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने पूछा महाप्रभु से कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, तभी महाप्रभु ने कुछ अपने वक्तव्य दिए. So when a devotee is asked to speak, then he speaks. Otherwise, they label you as arrogant, as disrespectful, as तो इस तरह से भक्तों को जब बोला जाए कुछ कहने के लिए तभी बोलना चाहिए, अन्यथा दूसरे हमको अभिमानी समझेंगे और कहेंगे कि आपका व्यवहार अनुचित है. In fact, they're disrespectful and unkind, but they are putting the label on the devotee. वास्तव में तो वो ही जो है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं हमारा, लेकिन वो हम पे इसका लेबल लगा देते हैं. So we speak only when we are asked to speak. तो हम तभी बोलेंगे जब हमसे कहा जाए कुछ बोलने के लिए. And the best way to speak with an impersonalist is to ask him questions that will expose the defects of their philosophy. तो इस तरह से हम ऐसे लोगों से बात करने का जो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उनसे प्रश्न पूछें और जिससे उन प्रश्नों से उनका जो धारणा है वो अनावृत हो जाएगी. But before this level of
exchange comes, then we have to win them over. They have to feel that they are eager to hear from us. Otherwise, if they are not eager to hear, we should not speak. तो इस चर्चा के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम उनका हृदय कैसे जीतें, क्योंकि अन्यथा उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. And then Chaitanya Mahaprabhu, the example with Prakasananda and Saraswati and the sannyasis, Mahaprabhu displayed his transcendental effulgence. तो इस तरह से जब प्रकाशानंद सरस्वती से महाप्रभु मिले थे, तो उन्होंने अपना पारलौकिक तेज उनके सामने प्रस्तुत किया. And he, through this effulgence, they could experience the bliss of the Brahman. They could experience the Brahman bliss to see in Mahaprabhu. तो इस महाप्रभु के पारलौकिक तेज को देखकर ही उन्होंने उस आनंद को महसूस किया, उस माध्यम को महसूस किया और समझ गए कि ये भगवान है. And by giving them that mercy, they all of them became purified. और इस तरह से जो भगवान ने उन पर दया दिखाई तो वो पवित्र हो गए. So how can we do the same thing? तो हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? We just have to be humble. तो हमारे अंदर बहुत विनम्रता होनी चाहिए, Tolerant and patient, बहुत सहिष्णु होना चाहिए और बहुत ही धैर्य रखना चाहिए. and we remember the third verse of Shikshastakam, which states that we should give all respect to others and never expect respect to ourselves. और जो शिक्षा अष्टकम का जो तीसरा श्लोक है, उसकी धारणा को हमेशा अपने हृदय में रखना चाहिए कि सम्मान दूसरे को देना है, अपने लिए नहीं. And we should be humble like a blade of grass and tolerant like a tree. और हमको विनम्र होना चाहिए एक घास के तृण की तरह, और हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए एक वृक्ष की तरह. By displaying these qualities in truth, then people can be inspired to hear from us. तो ये जब हम दिखाएंगे, ये जो गुण प्रदर्शित करेंगे, तो फिर लोग उत्साहित होंगे हमारी बात सुनने के लिए. And that is the only way they can become uplifted from the perspectives of impersonalism. और यही एक तरीका है कि हम उनका उत्थान कर सकते हैं. जो ये निराकारवाद में वो फंसे हुए हैं, इसी उपाय से हम उनका उत्थान कर सकते हैं. So we need to be happy in bhakti. तो हमको भक्ति में आनंदित रहना चाहिए. And when we are happy, they feel it that we are happy. और इस तरह से जब हम आनंदित होते हैं तो उसका अनुभव वो कर सकते हैं. And when they feel that we are happy, they are open to see how we are happy and where is this happiness coming from. और जब हम आनंदित दिखते हैं तो वो इस बात को देखने के लिए कि हम किस तरह से आनंदित हैं, इस बात को वो जानना चाहते हैं. So the people are more feeling than actually willing to intellectualize in this age. और इस तरह से जो आजकल ये जो काल है, ये जो कलयुग का काल है, इसमें जो दूसरे हैं वो महसूस ज्यादा करना चाहते हैं, उस चीज को ग्रहण करने से ज्यादा उसको महसूस करना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है. So in conclusion, yes, the world is an emanation from God, but our acharyas are explaining just like the body and the shadow. तो निष्कर्ष ये निकला कि ये जो भौतिक जगत है वो भगवान से ही उसका उद्गम है, और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे शरीर और शरीर की छाया. So the shadow is real, but it's got no substance, because the substance is within the body which casts the shadow. तो इसको हम समझते हैं कि छाया जैसे होती है वो वास्तविक तो है, लेकिन उसमें कोई पदार्थ नहीं है. और पदार्थ कहाँ है? पदार्थ तो सिर्फ शरीर में है. So this world is simply here for two purposes: to keep the jivas that want to be in Maya,
to stay in Maya. And the second purpose is if you want to get out of samsara and go back to the spiritual world, you can use everything in this world in the service of God. And in that way, by offering it to God, you will go to God. इस चीज को हमको समझना चाहिए कि ये जो संसार है इसका दो उद्देश्य है। एक तो जो जो जीव है उनको माया में रखना, और दूसरा, और अगर जो जीव इस संसार से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस संसार की जो वस्तुएं हैं उनको हम यूज करके, उसका उपयोग करके हम इस संसार से बाहर भी निकल सकते हैं आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। So we don't reject the world, but we try to offer the world or whatever is offerable in this world in the service of the Lord. And in that way, we become intimately united or connected with Krishna. Yoginam api sarvesam madgatenteram atmanam shradhavam bhajatam yomam sami yuktatam mataha. Bhagavad Gita 6:47. तो हम इस जगत को अस्वीकार नहीं करते, जो भक्त हैं इस जगत को अस्वीकार नहीं करते, लेकिन इस जगत में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उनको भगवान की सेवा में लगाते हैं, और इस तरह से वो भगवान से घनिष्ठ रूप से हम अपने को संयुक्त कर सकते हैं। प्रभु जी ने भगवत गीता का एक श्लोक भी इसके लिए उद्धृत किया। Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. थैंक यू प्रभु। Yeah, साधु so साधु साधु। I carried on a little longer than what I was supposed to be, but my computer was giving me trouble. I'm really sorry. So I think there are a few questions I can answer quickly. तो प्रभु जी धन्यवाद देना चाहते हैं, और ये थोड़ा माफी भी मांग रहे हैं कि उनका थोड़ा कंप्यूटर में इश्यू हो गया था, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय ले लिया। अगर किसी का प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। Yeah, there is one question here. One devotee is saying something. I have a doubt. I'm reading it. You can open the meeting chat and see it there. In general, also when suffering comes to us from other people and we can't or we don't want to do anything back to them, we just think they will get their karma back. God is watching, etc. Is this true? तो चंचल माता जी का यहाँ पे प्रश्न है कि मुझे एक डाउट है कि जनरली हम लोग जो भक्त हैं वो ये सोचते हैं कि अगर कोई दूसरा हमको परेशान करता है तो अपने वो जो अगर वो कोई बुरा कर्म कर रहा है तो उसको कर्म ही वापस, कर्म के सिद्धांत से उसको सब कुछ वापस मिलेगा, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। क्या ये सत्य है? In brief, the first thing is don't do as they do, because if you respond to evil with evil, you're falling on their level. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप वैसा मत करिए जैसे उन्होंने किया है, क्योंकि बुराई से बुराई के अपेक्षा बुराई नहीं करना चाहिए। Yeah. And we shouldn't be thinking even bad things that God will give them their karma, He's watching. This is revenge, vengeance, like being angry and wanting them to be punished. तो इस तरह से हमको सोचना भी नहीं चाहिए, किसी के बारे में कोई बुरी बात नहीं सोचना। ये सोचना भी कि भगवान उनको उनके कर्म का फल देंगे, ये भी एक बदले की भावना के अंतर्गत होता है। This is some level of hatred we are keeping in our heart. ये भी हमारे हृदय में एक घृणा है। So we rather pray for them. My dear Lord, these people are so foolish. They hurt me in this way, but please be merciful unto them and elevate them from this evil consciousness. तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि ये भगवान, ये मूर्ख हैं और आप अपनी कृपा इन पर दें, जिससे ये जो इस तरह से बुरा कर्म कर रहे हैं उससे ऊपर उठ सकें वो। Okay, so this is the answer to this question, and I think someone else wanted to ask something. तो इसका उत्तर मैंने आपको दिया। अगर किसी और कोई प्रश्न है, प्रभु जी, there is a question. Can we consider all demigods are devotees of Krishna? Are they in devotional service of Krishna?
तो प्रश्न ये है प्रतिमा माता जी का कि जितने भी देवता हैं क्या वो भगवान कृष्ण के ही भक्त हैं और हर समय वो भक्ति में सेवा करते हैं भगवान की? Yes, they are servants of Krishna. However, they may have some levels of impurity in them. We're not talking about Shiva, for example, who is completely pure. And Brahma, most of the time, is completely pure, but even we see sometimes he also falls into getting too involved with the material energy. Shivaji, mostly he is pure and self-content, self-satisfied. And he's just with Parvati. So तो देवता वैसे तो पवित्र हैं लेकिन कभी कभी उनमें अपवित्रता आ जाती है। जैसे ब्रह्मा जी हैं, वो कभी कभी एक दो बार वो उन्होंने देखा गया है कि वो गिर जाते हैं। शिव जी भी पवित्र हैं ज्यादातर और स्वयं से संतुष्ट रहते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी माया के जाल में फंस जाते हैं। So we respect them as devotees, but we know that the purest devotees the purest devotees are those who sincerely worship Krishna. तो ठीक है, हम उन देवताओं का आदर करते हैं, लेकिन हम लोग जो जो शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं वो हमेशा भगवान से ही जुड़े रहते हैं। And they're always thinking of the welfare of others. और वो हमेशा दूसरों का जो वेलफेयर है, उनका जो कल्याण है, उसी के बारे में सोचते हैं। So yes, we give respect to the demigods because they are performing some universal affairs. But we know that a Vaishnava is even pure Vaishnava is even higher than a demigod because Vaishnava can connect us directly with Krishna. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो देवता हैं वो जो ये सार्वभौमिक मामले हैं, जो दुनिया को चलाने के मामले हैं, उसकी देखरेख करते हैं, लेकिन जो शुद्ध वैष्णव होता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से जुड़ा होता है। Okay, Hare Krishna. थैंक यू प्रभु। तो समय हो चला है। थैंक यू। तो हम अब सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और थैंक यू प्रभु फॉर द वेरी नाइस लेक्चर। सॉरी इफ आई कमिटेड एनी मिस्टेक इन ट्रांसलेशन। So thank you very much. Thank you very much. It was very difficult subject. It's one of the most difficult subjects to discuss because a lot of philosophies there, a lot of philosophical conjecture. But if you understand the subject, you can simplify it and make it comprehensible. Otherwise, if you read the purport, basically most of the purport will go through over the heads of most people. If you want to understand that purport, you have to practically read it sentence by sentence and maybe think 2, 3, 4 minutes about each sentence. That's why I didn't embark on reading it, because it would have taken the whole time, and practically we wouldn't have understood much of what is being said unless we had a prior reading to it and prior focus to get it. So I encourage all devotees to read the purport in the context of what I shared, in the context of Prabhupada's teachings, and in this way they can take the most of it and benefit from it. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai, Ananta Koti Vaishnava ki jai, Shri Gaur Purnima ki jai, Nitai Gaur Premanande. हरि हरि बोल। तो आज थैंक यू प्रभु। तो आज हम अपनी कक्षा एक बार सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर अंत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सभी वैष्णव जनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हम विल नेवर सेंसेस।
Thank you, devotees. Hare Krishna. Wish you all the best. गौर पूर्णिमा महा महोत्सव की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।